Would request Mr. Kumar Shekhar Vijayendra to kindly afford a plantation welcome to Professor Manidhara Jagadish Kumar. Would request Dr. Good morning, everybody. On behalf of ASSOCHAM National Council on Education, it is my privilege and honor to welcome Honorable Governor of Uttar Pradesh, Srimati Anandiben Patel ji with us. Thank you very much, madam, for joining us. It is an honor for everybody because you are not only a governor, you are an academician and you are a motivator, inspirer for all of us. I welcome Professor M. Jagadish Kumar, Chairman UGC, who is with us today. Dr. Pankaj Mittal, Secretary General, AIU, my colleague Deepak Sood, Ashwani Lochan, and from industry, Mr. Piyush. Thank you very much for joining us today. The theme of today's International Summit is Driving Innovation and Inspiring Minds Through Industry-Academia Alliance. During the summit, we will have 3 technical sessions apart from the other sessions. 1. Fulfilling nation's aspiration through new education initiatives. 2. Redefining skill ecosystem to harness demographic dividend and future of higher education in the digital first economy. Honorable Prime Minister has given us a vision. He believes that education is the single most important instrument for social and economic transformation of the country. New education policy has proved that. We at ASSOCHAM are weaving a bridge between the academia and industry to fulfill the vision of our Honorable Prime Minister. We all in India is going through a considerable change. As per a report of Ernst & Young, by 2030, nearly 140 million people in the college-going age group, one of every 4th graduate will be of Indian origin. It means not only nationally, globally, we have the responsibility. We have to create wonderful youth. Under the leadership of Honorable Prime Minister, with his vision built on 4 foundational pillars of access, equity, quality, affordability, and accountability, new education policy has given us a path that how to move further. And I am sure that today's deliberation, discussions, and guidance, it will help us to go further on this path very strongly. I am sure that through implementation of new education policy, India will be on a track to attain Sustainable Development Goal 4, quality education for all, inclusive education for all, accessibility of affordable education for all, and we will become one of the leaders globally as we have been. Vishwa Guru. There is a challenge because in last few decades we have seen that the purpose of education became very myopic. We all thought that the purpose of education is to have employment. However, if we look at Indian ethos, our ancient scriptures, the purpose of education had always been to create good human beings. शिक्षा का उद्देश्य का मनोभाव अच्छे मनुष्य बनाना. I am sure that with the vision of Honorable Prime Minister, the way we all are moving forward, the complete educational ecosystem, the changes we have taken, the new students, the young generation will not only be employable, but they will be physically, mentally, spiritually, and emotionally strong. The future generation will change the complete scenario. We wish to work and we wish to ensure
that learning should be to know, to do, to be, and to live together. This is what has been always the philosophy of our country, and I'm sure that we are on the right path for the same in coming future also. Partnership with the industry is very important. As I mentioned that at ASSOCHAM we are weaving a bridge between academia and industry. It is very important to have industry with us. Many times we feel that our relationship with industry is not very organic. Generally we go to the industry with again a very selfish reason, give us internships, give our boys job, but we never ask, come with us, let us empower our youth together, let us work together, let us see where are the gaps, and those gaps, especially in the skills, because we try to give some static skills to our students, we have to come back and give fluid skill mindset to our students, which is going to change the complete scenario in future. Our universities, they need to work, and we are working on the mandate, creation of knowledge. But with creation of knowledge, now we have to integrate that knowledge with innovation and research. And we have to ensure that that knowledge is applicable also, application of knowledge. And that application of knowledge can only happen when industry come with us together. So from information to knowledge and from knowledge to wisdom, this is the path what our Honorable Prime Minister has shown to all of us through this new education policy. And I am sure that we will be in position, we will do it together, and today's summit will give us a vision, a mission to fulfill the aspirations by the inspiration of today's chief guest, Honorable Shrimati Anandi Patel, our Governor of Uttar Pradesh. I have seen her working. All of you must have seen. I think she is the only governor in the country where very frequently meetings of all universities are happening to see that how quality is improved, to see how experiential learning is happening, to see that how every university is doing something unique as per their local needs and demands. Thank you very much again, madam. Thank you, Professor Jagdish Kumar. Thank you, madam, for joining us today. We are looking forward to learn from you many new things today. Thank you very much. Honorable Chief Guest, Madam Anandi Patel, Professor Amadila Jagdish Kumar, Mr. Suman, Mr. Kumar, Dr. Pankaj, and Mr. Deepa. Thank you. And all the delegates present here, a very warm good morning. I think it is very fair to assume that all of us who are present in this room are passionate about education. We all believe that education can uplift generations, can do away with the societal barriers, can propel economies. But this topic of education becomes very intense when we take it to the mass segment, the tier 2, tier 3 segments of the nation. It is at that segment where we have a lot of first generation learners. These are students who are probably the first ones going through a formal higher education in their families. They don't have anyone in their families who they have seen thriving in a professional environment. Like most of our kids would have seen us, how we react to a workplace or professional ethics for that matter. This is a huge gap. These guys have a make-believe view, make-believe world view of how a corporate would look like, but they don't have any information as to what it would take to get there. This gap is an adaptive gap. It's a complex, ambiguous problem and needs to be tackled at various levels. One of the things which we feel works really well is getting the industry integrations sooner and more often, more frequent. So we should have industry
integrated into the education from day one. Why can't we imagine education where there are master classes from industry experts which can then graduate to workshops, then graduate to live projects, and then graduate to even consulting assignments. So, and some great steps are being taken with the new internship reforms as well, which are very much in the right direction. At a breakneck speed, and the pandemic has only aggravated that. All of us would have probably laughed at the idea of gig hiring if you would have heard about it. It would be as prominent as it is now 3 years ago. But it is a reality upon us. So similarly, a lot of other things, the industry is moving at a breakneck speed. Now, our colleges, our universities, they are excellent at giving foundation modules, core concepts, but it is unfair on our part to expect them to adapt so quickly to the changing needs which are changing by the hour. Therefore, we need to provide a layer of choice, a layer of flexibility, which could be in the form of certifications, career tracks, electives, whatever you may call it, wherein the students can, and it's not only to the student, but also to the faculty and also to the overall, we can have the student take up those subjects, areas which are required by the industry today and not yesterday. At the same time, I would also like to mention that the industry expects to be a recipient of the talent pipeline. As partners in the India Skills Report, we realize that a lot of BFSI and IT companies have these programs integrated into educational institutes. I encourage more industries and more companies to do so as well. Guest of today's program, Madam Ananti Honorable Governor of Uttar Pradesh, the Honorable Chairman of UGC, Professor Jagadish Kumarji, the President of ASSOCHAM, Shri Kumar Shekharji, who is shared also, Deepak Surji, the Secretary General of ASSOCHAM. So many friends who are in the audience, I see so many familiar faces here, the Vice Chancellors from many universities. A very good morning to you. Namaste, Pranam. First of all, let me thank ASSOCHAM for including me in the inaugural session of this important program, because this is something very important where they are talking about International Education Summit and skill development in 2022. As we all know that the things are changing. They are changing a lot. In every aspect of higher education, just now you were saying that every morning we get up and we see a new news from the UGC, the new guidance have come, new regulations have come, new policy has come. So things are changing. And this does remind me of something which happened more than 100 years back. And this I repeated very often in many conferences, that in 1905, Einstein gave a question paper to his students, and when the teaching assistant saw the question paper, he came running back to Einstein saying, "Sir, कुछ गलती हो गई है." He said, "What happened?" He said, "Sir, there is something terribly wrong, कुछ गलती हो गई है." He said, "What happened?" He said, "Sir, this is the same question paper you gave to the same set of students last year also. So same question paper this year. So there is a terrible mistake." So Einstein smiled. He says, "कोई गलती नहीं है. Questions same है, answers different है, right?" Because in 1904, Einstein came out with 4 papers which changed the very paradigm of physics education. That was on relativity, that was on the branches here, Brownian motion and all. So that changed the very paradigm of physics education. So the questions were the same, but the answers were different, and he wanted to know whether the students have really gone through those papers and understood those papers. Similarly, today, more than 100 years after, before NEP and after NEP, questions are the same: what to teach, how to assess the students. He wants to do means whatever he wants to study, from wherever he wants to study and whenever he wants to study. So a number of courses can be done from multiple universities, and then that can be clubbed together, and he or she can get a degree. So these type of innovations are there in the curriculum. And then one important thing where industry is very relevant is the internships and the apprenticeship. The National Education Policy says that for every program and in every semester there will be an internship. So the universities will be looking forward to the industries for getting the internship opportunities for their students. Yesterday only we saw a circular from the youth to the
industry people, and the faculty gets an opportunity to interact with the faculty and to sponsor research or whatever, and collaboration between the university and the industry. So, internships as well as apprenticeship. Now, there are many programs in the universities. Even the NCHAT and UGC came up with a program, which is an apprenticeship embedded program from day one, especially for the open universities. From the day one, the students are enrolled as apprentice in some industry, and when they study and come out, they are already trained for a particular type of job. So, what to teach is totally now different. Pre-NEP and pre-COVID to post-NEP and post-COVID. Now, second question, how to teach? How to teach? So far, we were all following the method of lecture teaching, where it was mostly information given to the student, and information was given by the teacher, and the student could or could not absorb the information many times. So now the policy talks about flipped classroom model, in which they are talking about that the students will be given the text or the audios or the videos in advance. It could be the videos of the teacher, or it could be the videos which are already there written, because a lot of material is there. So many edtech companies have come, which are having so many courses or online courses. So the students can be reading that or listening to the videos or studying at home, and in the class what happens? Only discussion happens. Only, say, group discussion, understanding, rationalization, problem solving, reasoning. So the result will be that the understanding will be better, application will be better rather than the overall learning, and the students, when they come out, they will be more employable than before. So technology, for a long time, I have been in UGC for 30 years. So in UGC, we were trying very hard that the teachers should use the technology for teaching, but we were not getting so successful as it happened during the COVID time. So that was one opportunity that, during COVID, technology was used to a very large extent, and now online education is not going to be something which will go away with COVID. It is going to stay, and blended education will be something which will be there forever. So how to teach is also changing, and how to assess and evaluate the students. So far, again, you know that 3-hour examination at the end of the semester was the way in which we were assessing the students. And we also saw that how difficult it was to take that 3-hour examination, because offline was not possible due to pandemic, and online was not possible due to the digital divide which is existing in the country. And in any case, policy also says that this 3-hour examination at the end of the semester is not a right way to assess the system. Indian knowledge systems, the students were not made aware of. Again, that is something which the policy has very categorically mentioned that it should be taken care of. Therefore, I am ending my small address with this thing, that now the policy has told us that how the answers are different, but it is for the universities to write those new answers in their, say, statutes, ordinances, acts, and then transform the way the students are learning. We don't want informative learning, we want transformative learning. And the National Education Policy has shown us the way that how to move towards transformative learning. So thank you very much, and I hope that India will become Vishnu once again, once this National Education Policy is implemented and led and spread. Thank you very much. Honorable Governor of Uttar Pradesh and my distinguished colleagues, it's my honor and privilege to be here and share some of my thoughts with you. UGC is working on a dream of reskill, upskill, and cross skill. And our dream is derived from the vision of the National Education Policy. And the vision of the National Education Policy is designed to meet the aspirations of our youth. And what are the aspirations of our youth? As someone who has interacted with young people throughout my career, and I still teach at IIT Delhi. I am a professor of electrical engineering at IIT Delhi. I can tell you
the aspirations of today's youth. They would like to become lifelong learners. They would like to become critical thinkers. They want to be problem solvers. They want to take risks and fail, learn from the failures. They want to build teams. They want to lead teams. They want to be empathetic. They want to be good communicators. And ultimately, they want to be good human beings. And if you look at the higher educational institutions, not just in India, but across the globe, the higher education is very rigid. It doesn't understand that students have different cognitive abilities, students have different financial capabilities, they have different needs and different aspirations. So one of the biggest challenges for us is how to introduce flexibility in our higher educational system. And that is where the national education policy becomes an important vision for all of us. Some of you have mentioned that in the recent past, many reforms have started coming from UGC. I joined at UGC on 7th February, it's about 3 months plus. During last 3 months, within UGC itself, we have been discussing very intensely how to make UGC as an organization more responsive, more accountable to the stakeholders. Whatever UGC is going to do in the coming months and years will ensure that your hands are strengthened as leaders of the educational institutions so that you can bring in many reforms in the higher educational arena. Friends, in our country, there are many excellent institutions such as IITs, ISRs, Indian Institute of Science. These excellent institutions, they are on top of the pyramid. And the bottom of the pyramid consists of thousands of our colleges, hundreds of our universities. You will be surprised to know that nearly 60% of our 45,000 colleges, they are located in rural backgrounds. Nearly 42% of our universities are located in rural setups. That means what? Majority of our students, they are coming from rural background. They are coming from weaker sections, socially, economically weaker sections. A large chunk of our 4,000 crores who are in the higher educational institutions come from this background. Unless these students are provided with opportunity to gain knowledge and skills, excellence cannot be maintained. As educators, therefore, it is our first priority to make sure that the processes in our higher educational institutions are aligned to take care of our students coming from rural areas, from remote areas, coming from socially and economically weaker sections. But how can we do that? If you look at the admission processes of many universities and colleges, the competition is so high in a place like JNU, where
students from very poor families come and they get transformed within few years and contribute immensely to the growth of our country. If I take JNU as an example, we admit only about 3% of the total applicants. And what about the remaining 97% of the applicants? How can we reach out to them? And this is the dream of our Prime Minister. When he was speaking to a group of educators a couple of months ago, he said, we need to create unlimited number of seats in each discipline. Recently we have seen in Ukraine what happened. Thousands of students came back. And we have suddenly realized the need for creating more seats in medical schools, building more medical institutions, universities. So how can we reach out? One of the solutions that is emphasized in national education policy is the introduction of the digital technology. Soon we are going to come up with very simplified regulations for online education, which will empower a large number of universities and colleges to start online degrees. Instead of forcing these students to come from remote areas, from rural areas, when they have difficulty financially to come and live in a big city and study, why not we take high quality education to their doorsteps? And that is where the online education becomes very, very important. We are also working on building a digital university, which will work as a university which will offer degrees in multiple areas. Certificate, diploma, degree level programs. The highest quality of lectures and programs will be available in this digital university. We will make career growth also is taken care of. You have also heard about internationalization of our higher education. Soon we are going to come up with regulations which will enable our Indian universities to establish our campuses abroad. These regulations will also enable the foreign universities to come and establish their campuses here. Recently, you have seen a new regulation which permits top universities and colleges to go for twinning, joint and dual degrees. For you, as leaders of educational institutions, it is for you to take the first step. UGC will facilitate many things, but you need to take the first step. For example, many of us talk about academia-industry interaction. No, I do not consider neither the industry as selfish nor the academia as selfish. When the industry says that we need people who are employable, they are not selfish. When the academia asks, you please provide us internships for our students, they are not selfish. We are all partners in the same process of building our country so that it becomes socially and economically, technologically a strong country in this world. But for this to happen, both sides have to take the first step. In the universities, UGC has recently considered the possibility of creating professor of practice. Many of you could offer lectures, programs in emerging areas in the universities. Similarly, we are also coming up with schemes where our students can go for internship, not just only in industry, but in the social sector, in other areas, so that our students will become complete human beings. We do not want our students to become curiosity-driven, pleasure-seeking human animals.
That's the reason why in our national education policy, we also emphasize on Indian ethos, ethical frameworks as part of the education. Ultimately, all of us should be guided by the neutral values of love, compassion, empathy, and sharing with each other. And that is the only way we can build a happy society and become a role model for the rest of the world. Many reforms are going to take place, and today higher education is an exciting arena. And let us work together. Let us transform our higher education in our country. Thank you very much. यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एमजे कुमार जी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सेक्रेटरी जनरल श्रीमती पंकज मित्तल जी, एसोचैम के जनरल सेक्रेटरी श्री दीपक सूद जी, एसोचैम के चेयरमैन श्री कुंवर शेखर जी, सह अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी रोचन जी, संस्थान एजुकेशन के सह संस्थापक श्री पीयूष नगरू जी, समिट में उपस्थित अन्य महानुभावगण, देवी और सज्जनों, मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज मुझे एसोचैम के तत्वाधान में आयोजित 15वीं इंटरनेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट समिट 22 के उद्घाटन सत्र में आप सभी के बीच उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने भारतीय उद्योग और व्यावसायिक गतिविधियों के साथ साथ भारतीय शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा के उत्थान की दिशा में काफ़ी संवेदनशीलता दिखाई है। यह बहुत अच्छा है, न केवल शिक्षा की विशेषज्ञता के मामले में बल्कि कौशल विकास के मामले में भी मैं एसोचैम को इसके लिए बधाई देती हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस समिट में देश भर के प्रतिष्ठित सरकारी और निजी संस्थानों के शिक्षाविद, कुलाधिपति, कुलपति, प्राचार्य, डीन, निर्देशक और प्रमोटर, एडटेक स्टार्टअप, हितधारक और छात्र सहभाग कर रहे हैं। देश का पुराना संगठन होने के नाते आज एसोचैम से 250 से अधिक चैम्बर्स और ट्रेड एसोसिएशन संबंध हैं और पूरे देश में 4.5 लाख से अधिक उद्योग सदस्यों की सेवा कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का कार्य आज एक मिशन की तरह पूरे देश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हम सब आंगनवाड़ी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लाभ देश को मिले, इसके लिए पूरजोश में लगे हैं। यूनिवर्सिटी को भी आंगनवाड़ी से जोड़कर आंगनवाड़ी को बेहतर सुविधा मिले, इसका प्रयास कर रहे हैं। और इसमें मुझे ये कहना है कि इसमें हमारी यूनिवर्सिटी और इसके साथ जितने भी संलग्न कॉलेजेस हैं, इस सभी कॉलेजों को इसमें जोड़ा है, क्योंकि जब हम नेशनल कॉलेज की बात करते हैं, केजी से पीजी तक की बात करते हैं और हमारा ध्यान सिर्फ यूनिवर्सिटी तक सीमित रहेगा और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे, वो छूटने नहीं चाहिए। वे भी किस तरह पढ़े अपने छोटे छोटे कमरे में, उनके लिए भी हमें सुविधा प्रदान करनी है। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में मैंने अभियान शुरू किया है और आज तक आप सब लोगों के सहयोग से, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के सहयोग से 200-300 मतलब 2300 आंगनवाड़ी तक हम पहुँचे हैं। और एक आंगनवाड़ी में 50,000 रुपये के साधन एजुकेशनल किट शामिल हुई है और वे हम दे रहे हैं। इसके साथ साथ
बच्चों को कैसे पढ़ाना है, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या सिखाना है, संस्कार तो वहाँ से मिलते हैं। और इसी वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का ट्रेनिंग भी हम लोगों ने शुरू किया है, और दोनों भोपाल में भी किया और लखनऊ में हुआ और काशी में भी किया, और वो ट्रेनिंग आज आगे चल रही है मित्रों। मतलब ये हुआ कि मैंने केजी टू पीजी को जोड़ने का प्रयास किया है। भारत के जिस सुनहरे भविष्य के संकल्प के साथ हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस भविष्य की ओर हमें आज की नई पीढ़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से ही ले जाएगी। शिक्षा द्वारा हमें ज्ञान आधारित समाज की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए देश के लोगों को सक्षम बनाना होगा। इसके माध्यम से भविष्य में हम कितना आगे जाए, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में कैसी दिशा दे रहे हैं। इसलिए मैं मानती हूँ कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़े फैक्टर्स में से एक है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो मैं बताना चाहूँगी कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षा से जुड़े अन्य महानुभावों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में बहुत मेहनत की है। इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। विगत एक वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधार बनाकर अनेक बड़े फैसले लिए गए हैं। इंडस्ट्रियल सदी का युवा नए नए स्वप्न देख रहे हैं, उनमें नई ऊर्जा है और नयापन भी है। वो बदलाव के लिए तैयार है, वह इंतजार नहीं करना चाहते। आज का युवा अपनी दुनिया अपने तरीके से बनाना चाहते हैं, उनको बांधना पसंद नहीं, उन्हें मुक्ति से उड़ना है। छोटे छोटे गांव से आ रहे युवा भी असाधारण काम कर रहे हैं। रोबोटिक, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्र से अपने परचम आज का युवा लहरा रहा है। यही युवा भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को रिवॉल्यूशनाइज कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया को नई गति दे रहे हैं। पूरे देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन एक साथ समान तरीके से शहर से लेकर गांव तक हो रहा है। आज विश्व भारत की सफलता को पॉलिटिकली देख रहा है, जो पहले कभी नहीं दिखता था। इसलिए हमें विश्वास है कि नई टेक्नोलॉजी से हम चैलेंज और सरल सॉल्यूशन से चेंज लाएंगे। हम सभी ने देखा है कि कोरोना कालखंड में कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था सामने चुनौतियाँ आई थी। स्टूडेंट्स की पढ़ाई का जीवन का ढंग भी बदल गया, लेकिन उत्तर प्रदेश एवं देश के विद्यार्थियों ने तेजी से इस बदलाव को स्वीकार किया। ऑनलाइन एजुकेशन अब एक सहज चलन बन गया है। आज कोरोना के कठिन समय से ऑनलाइन शिक्षा का महत्व हम सहज ले रहे हैं। भारत सरकार ने स्कूल एजुकेशन के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म और उच्च शिक्षा के लिए स्वयं प्लेटफॉर्म द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हुए। दीक्षा पर आज तक 4,52 करोड़ से ज़्यादा हिट हुए हैं तथा स्वयं पोर्टल पर 2700 से ज़्यादा कोर्स के लिए 1.25 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आज देश में इंजीनियरिंग की शिक्षा भी मातृभाषा से दी जा रही है। 11 से ज़्यादा भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, जिससे देश के अंतिम कोने तक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपने सामर्थ्य को उजागर करने का मौका भी मिलेगा और समाज को लैंग्वेज से बांधने का समय समाप्त हो जाएगा। मित्रों, आज का युवा अपनी व्यवसाय, अपनी सुविधा खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है। भारत से आने वाले युवाओं ने
टोक्यो ओलंपिक्स में देश का झंडा बुलंद किया है, ये सब लोगों ने देखा है। ये भारत को नई पहचान दे रहे हैं। देश के ऐसे ही करोड़ों युवा आज अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण काम कर रहे हैं, असाधारण लक्ष्यों की नींव रख रहे हैं। कोई कला और संस्कृति के क्षेत्र में पुरातन और आधुनिक के फ्यूजन से नई विधाओं को जन्म दे रहा है। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मानवीय क्षमताओं को नई ऊंचाई दे रहा है, तो कोई मशीन लर्निंग में नए माइलस्टोन्स की तैयारी कर रहा है। यानी हर क्षेत्र में भारत के युवा अपना परचम लहरा रहे हैं। यही युवा भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को रिवॉल्यूशन कर रहे, डिजिटल इंडिया को नई गति दे रहे हैं। युवाओं की इन्हीं सभी गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उनके सपनों को साकार करने की व्यवस्था रखी गई है, ताकि युवा मन जिस दिशा में भी सोचना चाहिए, खुले आकाश में जैसे उड़ना चाहिए, देश की नई शिक्षा व्यवस्था उसे वैसे ही अवसर उपलब्ध कराएगी। आज बन रही संभावनाओं को साकार करने के लिए हमारे युवाओं को दुनिया से एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। इस समिट में बड़ी संख्या में हमारे शिक्षाविद उपस्थित हैं, जो किसी न किसी शैक्षणिक संस्थान से संबद्ध है। आपका शैक्षिक संस्थान विद्यार्थियों के कौशल विकास को प्राथमिकता देकर उन्हें उद्यमिता के लिए तैयार कर सकते हैं। शिक्षा नीति में पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही विद्यार्थियों को स्कूल और उच्च शिक्षा में व्यावसायिक और कौशल शिक्षा के पाठ्यक्रमों से दीक्षित किए जाने पर जोर दिया गया है। मैं यह भी कहना चाहूँगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फॉर्मुलेशन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक हर स्टेज पर हमारे शिक्षक सक्रिय रूप से इस अभियान का हिस्सा रहे हैं। आप सभी शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखते हैं, आप व्यापक अनुभव के धारक हैं। इसलिए जब आप प्रयास करेंगे तो आपके प्रयास राष्ट्र को बहुत आगे लेकर जाएंगे। मित्रों, आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सभी क्षेत्रों में ऐसे बदलावों को देखा जा सकता है, जो नए भारत के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक भी है। यह समय हमारे नौजवानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का युवा देश का तेज विकास चाहता है। हमारे देश के अनेक कुशल कामगार और प्रोफेशनल्स ने कई देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाया है। मैं विश्वास करती हूँ कि एसोचैम संगठन से जुड़े महानुभाव जिस प्रकार देश के औद्योगिक विकास में योगदान दे रहे हैं, उसी प्रकार युवाओं के कौशल विकास को बढ़ाने में आपका यह संगठन महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसके लिए संकल्पों की आवश्यकता है। आज एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जो देश के उद्यम जो ये बहुत ही जरूरी है। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री थी और राजस्व मंत्री थी, तब भी मुझे ये ध्यान में आया था कि एक ही पोर्टल पर सब सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। एक ही पोर्टल पर हर राज्य में स्टार्टअप की सुविधा के लिए सेंटर की स्थापना होनी चाहिए। पेटेंट प्राप्त करने की सुविधा हो, इंक्यूबेशन उन्नयन और स्टार्टअप को रेंटल लीज प्राप्त करने में आसानी हो, इंक्यूबेटर बेहतर ढंग से कर सके, स्टार्टअप से संबंधित कार्यक्रम हो, निवेश प्राप्त करने के अधिक अवसर मिले, वित्तीय और गैर वित्तीय सहयोग से इनोवेशन को बढ़ावा मिले। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए, जिसकी वजह से एक ही जगह से एक ही ई पोर्टल से सभी को ये सुविधा प्राप्त हो। और मैं चाहती हूँ कि हर एक स्टेट में, सभी स्टेट में ऐसी सुविधा होगी तो हमारा देश बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ेगा। और इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि एसोचैम ऐसी महिलाओं के साथ मिलकर ऐसी कोई व्यवस्था खड़ी करे कि जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्ट बाजार में जाए,
इसकी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको कुछ न कुछ सुविधाएं देने वाले लोग मिले, उसके साथ जुड़े और अच्छी तरह से अपना काम करें और साथ साथ में उनको जो बैंक से पैसे चाहिए वो भी पैसे उसको मिल जाए तुरंत, तो वो अच्छी तरह से काम कर सकती है और उसका सहयोग भी देश के विकास में आज हो रहा है। अच्छा काम करके देश को सहयोग कर रही है। तो ऐसे काम हमारे एसोचैम भी कर सकते हैं और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के साथ जुड़कर आप महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाएं। अंत में एक बात मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे यूजीसी के चेयरमैन इधर है और उन्होंने बताया कि कोई आवश्यकता है सुधार की, कोई सूचन। ये मेरे विचार है। मैंने अब तक 80 यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह में मैं गई, 80, और एक बार नहीं 3 साल, मतलब 240 बार यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गई। और मैं जब भवन देखती हूँ ऊपर से 200 एकड़ जमीन, एक भवन इधर, दूसरा वहां, तीसरा वहां, चौथा इधर, पांचवा वहां और हॉस्टल 10 किलोमीटर दूर। हम सोचे तो सही मित्रों कि हमारी बच्चियों, हमारे स्टूडेंट्स बिना साधन 10 किलोमीटर दूर से चलकर ये भवनों में कैसे आते हैं। दूसरा, मेरा एक कहना है, नियम है, 200 एकड़ जमीन पर भवन बनते हैं। भवन की दुर्दशा आपने देखी है, हॉस्टलों की व्यवस्था दुर्दशा आपने देखी है। मैं तो सब कुछ देखकर आई हूँ। मैं मानती हूँ कि क्या मल्टी लेवल भवन नहीं बना सकते? विदेशों में है कि नहीं? विदेशों में है कि नहीं? और हमारे स्टूडेंट वहां पढ़ने के लिए जाते हैं, एक्सपर्ट बनने के लिए वहां जाते हैं। 10 मंजिले भवन बनाकर क्या हम शॉर्ट नहीं कर सकते? और इसमें लिफ्ट हो, सभी सुविधा हो और बच्चे आसानी से वहां पढ़ सकें। देखिए, मैं देखती हूँ कि यूनिवर्सिटी को राज्य सरकार सबसे पहले 100 करोड़ 150 करोड़ रुपया देती है। इसका उपयोग सबसे पहले क्या होता है? 200 एकड़ जमीन की कंपाउंड वॉल बनाने में, कंपाउंड वॉल बनाने। फिर 1 साल 2 साल के बाद फिर 50 करोड़ मिलेगा जो भवन बनेगा, एक एकेडमिक। फिर आएगी कॉलेज का भवन, फिर आएगा उनका भवन, फिर आएगा उनका। हमारे जैसे एक गरीब देश के लिए क्या आवश्यकता है सभी। और इसी वजह से मैं तो एक प्रार्थना करती हूँ कि सब इकट्ठे हो। क्या कितनी, हाँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जरूरत है, कृषि यूनिवर्सिटी के लिए जरूरत है, लेकिन जो हम ऐसे कोशिश चलाते हैं जिसमें ज़्यादा जमीन की आवश्यकता नहीं है, तो इतनी महंगी जमीन का उपयोग हम न करें। 50 एकड़ 60 एकड़ जमीन पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर हमें हमारे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते। ये मेरा एक सुझाव है, ये सुझाव है। दूसरा मेरा सुझाव है, यूजीसी ग्रांट देती है। जो यूनिवर्सिटी को 100 साल हो गए हैं, जो 50 साल से काम कर रहे हैं, जो 40 साल से काम कर रहे हैं, उनको भवन की कोई आवश्यकता नहीं। भवन की कोई ग्रांट नहीं देनी चाहिए, लेकिन सुधार करने के लिए ग्रांट दे दिया तो जरूरी है। और तीसरा, एक नई पॉलिसी जो आ रही है, इसमें कई अनेक प्रकार की लैब बनाने की आवश्यकता है। और ये लैब बनाने के लिए, टेस्टिंग के लिए यूनिवर्सिटियों को आप ग्रांट दीजिए, जिसकी वजह से दूर दूर से आने वाले जो बच्चे हैं उनको वहाँ ही लैब टेस्टिंग का काम भी कर सके और उत्पादन भी कर सके और उसमें सहाय भी कर सके। तो मुझे ये लगता है कि रिफॉर्म के लिए जरूरी है
सब लोगों को इकट्ठा करके अभी क्या रिफॉर्म करने की आवश्यकता है यूनिवर्सिटियों में, और साथ में किसानों को यूनिवर्सिटियों के साथ कैसे जोड़ना है, युवाओं को किसानों के साथ, टेक्निकल यूनिवर्सिटियों के साथ कैसे जोड़ना है, ये सब एक साथ बैठकर हमें सोचना पड़ेगा। साथ में मेडिकल यूनिवर्सिटी भी मेरे पास है, और इसी वजह से मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी को ये बताती हूँ कि अब ITI या तो आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ भी MOU साइन करो, और छोटे छोटे जो साधन है, जो ऑक्सीमीटर है जो ऑक्सीजन माप करता है, जो थर्मोमीटर है, ऐसे साधन तो हमारे स्टूडेंट्स अपनी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बना सकते हैं और आत्मनिर्भर यूनिवर्सिटी बना सकता है। तो ऐसे कुछ न कुछ साधन देने के लिए या तो ऐसी टेक्निक बच्चे सीखें और बनाएं स्वयं, और इसका सेल हो, इस दिशा में अभी जाने की आवश्यकता मुझे लगती है, क्योंकि कृषि यूनिवर्सिटी मेरे पास है, पशुपालन यूनिवर्सिटी में देखती है, क्या गौ संवर्धन हम नहीं कर सकते हैं इसके हिसाब से। मैंने देखा मोबाइल भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो परेशानी है ही हमें। तो आज 30 साल से 20 साल से जो अध्यापक कॉलेज में पढ़ा रहा है, क्या वो टेक्नो सेवी है? क्या वो पढ़ना चाहता है? क्योंकि 1-2 साल में रिटायर होने वाला है, वो तो वही चाहता है कि भाई अब 1 साल 2 साल में मैं क्या ये सब कुछ पढ़ूं। तो आवश्यकता है आज टेक्नो सेवी स्टूडेंट्स, प्रोफेसर कि जिसके पास टेक्नोलॉजी है, और आज माध्यम टेक्नोलॉजी का बना हुआ है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन आप लेक्चर रख रहे हो सब पर। तो हमारे जो अध्यापक ही उसके ज्ञाता नहीं होंगे तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? और इसी वजह से ऐसे टीचर्स की नियुक्ति हो जो टेक्नोलॉजी हो और अच्छे परफॉर्मेंस वाले हो, जो अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये भी पढ़ाने की भी एक स्किल होती है मित्रों, वो स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, और इसी वजह से ट्रेनिंग की इतनी ही आवश्यकता है। और ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, और ट्रेनिंग देते हैं तो 1 घंटे की या 2 घंटे की ट्रेनिंग मिलती है, इससे कोई फायदा नहीं होता है मित्रों। तो ये मेरे 2-3 सुझाव थे, और मैं चाहती हूँ कि कुछ न कुछ इसमें सुधार है। अंत में मैं समिट की सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और कामना के साथ अपनी बात समाप्त भी करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें और नई ऊर्जा के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए हर हमेशा कार्यरत रहें। धन्यवाद। जय हिंद। So honorable governor, thank you so much. आप आज यहाँ आए हैं, स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। And also all the people on the dais for honoring the invite of ASSOCHAM. Thank you very much. The whole team of ASSOCHAM who is putting up this program, so you guys have done a wonderful job. The world that we are living in, honestly, बहुत बदलाव है, बहुत बदल जाता है। I deal with the industry, so I tend to move towards business side always. So I try not to do that and stay with the education side of it. Just to take a little heads up in this room, how many of us are teachers? Obviously, all VCs are teachers. How many years of collective education experience is कमरे में रहेगा? Can you take just a guess? I mean, I don't know. I'm just taking the guess. What would it be? 2000 years. So 2000 साल का experience इस कमरे में बैठा है। हम लोगों को इसको celebrate करना चाहिए। And thank you very much because you are creating those great humans that we are talking about, the great technical people that we are talking about. All this is for those future generations that we are talking about. I think ma'am, आपने अपना career as an educator शुरू किया था, और वो भावनाएं, वो चीजें आप जब बात कर रही थी तो नजर आ रही थी, एंड आपने कई चीजों के ऊपर बात की है। तो कई चीजों का मेरे पास इमीडिएट जवाब नहीं है, पर एक आश्वासन मैं आपको देता हूँ कि ASSOCHAM की तरफ से हम इस हर चीज पे एक्शन करेंगे और एक्शन लेंगे। 3 बातें जो आपने बोली हैं, एक स्टार्टअप्स को लेके, एक IPR को लेके, एक रोल ऑफ विमेन एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इन इंडस्ट्री को लेके, रोजगार को लेके, स्किल को लेके।
So IPR center ASSOCHAM इसमें अगर 2 IPR centers चला रहा है, our aspiration is to increase that to 5. इसलिए कोविड के दौरान हमने वो खोले हैं एंड करीबन 200 से ज़्यादा एप्लीकेशंस ऑफ IP have been filed to these. एक बैंगलोर में है और एक दिल्ली में है. We expect to open it more. So that's one thing that I wanted to share with you. And इसके अंदर there are lady employees who are helping people, teaching them as to what is the importance of that IPR. So that's one. We are also running a center of excellence, and for the knowledge of everybody, center of excellence of tribal affairs with the Ministry of Tribal Affairs. जिसके अंदर हम एक साल में 350 प्रोफेशनल्स तैयार कर रहे हैं फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज. इसके अंदर लेडीज भी हैं, आदमी भी हैं, और जो आपने बात की ब्रांडिंग की, क्वालिटी की, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके ऊपर हम बहुत अच्छे से काम करें. तो पायलट हैज बीन कंप्लीटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी द गवर्नमेंट इज नाउ कंसीडरिंग कि इसको ज्यादातर और एक्सपैंड किया जाए, वर्किंग अक्रॉस द स्टेट्स. So these are the 2 things that I want to touch upon. Clearly, your talk about affordability, accessibility of the right kind of education is the need of the hour, and we will work with you. Professor, you spoke about critical thinking. I think it's the most important thing, challenging the paradigm, outward shifting thinking. I think that is what is the need of the hour, and therefore that continues. एक डेटा मैं और बोलना चाह रहा था कि यूनाइटेड नेशंस का है that more than 20% of the incremental global workforce for the next 30 years globally is going to come from India. So which means हमारी जो पाइपलाइन है, अगर वो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ें, किसी भी कॉलेज से पढ़ें, ये ग्लोबल मैन पावर की बात नहीं कर रहे. So their acceptability globally has to be great, and if this opportunity, and remember, we are talking about 180 million people which will be added in the workforce from age of 15 to 64. say 2020 से 2050 के बीच में का नंबर मैं अंदाज़न बोल रहा हूँ. So these are the number of people that we need to look at. So that is the challenge, but also an opportunity. And I think these are those people who can actually earn the money. And remember, and I'm, like I said, I'm a bit of an economist, a bit of a businessman, and I talk to industry. So $5 trillion economy का जो हमारा ड्रीम है, मैम ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात की. I think it's a very very important reform of the government where we say that हम ये चीज़ अपने लिए क्यों नहीं बना सकते, हम इस चीज़ को क्यों इम्पोर्ट करें. जो चीज़ करनी है उसको कीजिए, but what we can actually make here, why should we not make here? And for that we need capability, and for that we need people. If we want to plug ourselves into the global supply chain, दुनिया हमारी तरफ देख रही है, ये opportunity हमारे पास एक ही बार बची है, इस बार नहीं जाने देंगे. And I'm very very hopeful that India will achieve this very much sooner than later. And I don't stop at 5 trillion. I'm sure this is going to be 10 trillion, 20 trillion, 30 trillion. And if you just kind of layer up at 2050, you certainly are going to be better than bigger than that. I think skills, and this is we've already spoken about industry and in the academia interactions. I think a lot needs to be done. Many universities we work with, and I'm sure we can extend as much and whatever is required. Ma'am, NEP को लेके ASSOCHAM की जो एजुकेशन काउंसिल है, उसने बहुत ज़्यादा काम किया था, सजेशंस दिए थे, and I'm very happy कि हमारे जितने भी सजेशन थे, हर कोई कहते हैं हम जो भी दिया सकते हो, but we are very very proud about it. कि actually में हुआ था. And why it happens, we don't sit at ASSOCHAM and generate this. People like you who are sitting here are the ones who contributed experiential feedback, and therefore that has really happened, ma'am. And we have done webinars, physical meetings across the country to share with people what are the better things of it. 4.5 lakh members जो हमारे हैं, direct, indirect, they also are from MSME but also large ones. So they are also looking at pipeline of people. मैं आज का चेयरमैन से बात कर रहा था. There is always a gap of नौकरी वाले को नौकरी नहीं मिल रही, देने वाले को आने नहीं मिल रहा. So where is this gap, and when are we going to plug this gap? I'm sure this is not going to finish ever. And it is always nice that it is a dynamic change. Remember, rate of change. So all those things will continue, and I'm sure we will get there sooner than later. So thank you very much, Professor Dr. Mittal, for your words, for joining us this morning, and all the people on the dais, teachers, sponsors, partners, members of the media. Thank you all, staff from ASSOCHAM, ma'am's office, ABC, and everybody. Thank you very much for this morning session. Mr. Shekhar to present Rudrakshar Kant to Madam Kavita.